So we can see this the onion. ये प्याज है. अगर प्याज को हम बाहर से देखें, if we look at the onion from the outer side and cut the onion and look at the onion from the inner side, so the outer side is the yang and the inner side is yin. अगर ओनियन को हम बाहर से देखते हैं तो यांग है और ओनियन को अंदर से देखते हैं तो यिन है. So yang is always outer side, and if we go inside, then it will be yin in the same way. If we look at the ear, so the outer part of the ear is the yang and the inner part of the ear will be yin. तो हमारा कान का जो बाहर का भाग है, जैसे एक पहिया है, एक बील है, इस बील का जो बाहर का पार्ट है इसे हम यांग कहते हैं, और बील का जो केंद्रक है इसे हम यिन कहते हैं. आउटर पार्ट इज यांग, इनर पार्ट इज यिन. In the same way, we talk about the ear. This outer part of the ear can be considered as a yang, and the inner part of the ear can be considered as a yin. अंदर के भाग को हम यिन कहते हैं. So suppose someone is suffering with the acute problem. Acute problem means problem of the yang. Acute problem का अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति को acute problem हुई है, जैसे कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको तुरंत भागकर डॉक्टर के पास जाना पड़े, उसे एक्यूट प्रॉब्लम कहते हैं. और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप सोचो कोई बात नहीं, आज डॉक्टर बिजी हैं या हम बिजी हैं, तो चलो कल मिल लेंगे या परसों मिल लेंगे, उसे क्रोनिक प्रॉब्लम कहते हैं. सो द क्रोनिक प्रॉब्लम मींस it is there since many days, and even you are not in the hurry to visit doctor. But the acute problem means you have to visit doctor immediately. उदाहरण के लिए किसी को हार्ट अटैक आया तो आप ऐसा नहीं कर सकते चलो कोई बात नहीं अगले वीक में मिल लेंगे. In the case of heart attack, you have to visit the doctor immediately. You cannot take the appointment after 1 week. The person is getting accident, that is the acute problem, and you have to visit the doctor immediately. But the person is suffering with the knee pain since the 5 years, since the 10 years. Okay, you can also wait 3 more days, 5 more days, 1 week more. So the chronic problem means we have some time and we can wait. तो क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए हम कान के अंदरूनी भाग को ट्रीटमेंट देते हैं, और एक्यूट प्रॉब्लम के लिए हम कान के बाहरी भाग को ट्रीटमेंट देते हैं. सो सपोज समवन इज हैविंग सम एक्यूट डिसऑर्डर, डोंट वरी, जस्ट डू द रैंडम निडलिंग ऑल अराउंड हियर. अगर किसी को कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ पर रैंडम निडल करिए. So whatever the problem is, whatever. Suppose there is an inflammation in the body, शरीर में कुछ भी infection, inflammation, sudden pain, injury, accident, sudden high blood pressure, sudden chest pain, sudden heart attack, whatever happening, and you are feeling, oh, this is the emergency, then do the treatment here on the outer side of the ear. तो आपको ट्रीटमेंट कान के बाहर करना होगा, क्योंकि कान का जो बाहरी भाग होता है उसे हम कहते हैं यांग. और यांग का मतलब है कि जो एक्यूट बीमारियों से लड़ता है. And the person is suffering with the chronic disease, old disease, maybe lower back pain since many months or year, tiredness, weakness, or the breathing difficulty, asthma, and taking the medicine since many months or many years, the digestive disorder since long time. So this is the yin problem. We have to treat the inner area. तो ऐसी प्रॉब्लम में हम इनर एरिया को ट्रीट करते हैं. So if we look at this image, so the outer area, this outer rim is called yang, and the inner area or the inner part is called yin. And this is the part of the ear which is attached. This is called the root of the ear, the root of ear, root which is attached. ये कान का वो भाग है जो जुड़ा रहता है.
So suppose someone needs some emergency treatment, whatever the problem, whatever. Suppose the infections of COVID, and family member and everyone are worrying a lot what to do, what not to do. So don't worry. Just treat the outer part of the ear to fight with the infections, because it is an acute problem and you need hospitalization. Otherwise, means we are becoming panic and we are thinking for the hospitalization. That is coming under the yang. उसे हम yang की problem कहते हैं. So we can put the needle here, or we can put the seeds here, or we can do the bloodletting. We can do three things. Number one, if the person is suffering with acute disorder, number one, we can put the needle. Number two, we can put the seeds. And number three, we can do the bloodletting. तो तीन काम में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, या तो निडल लगा दें, या सीड्स लगा दें, या ब्लड लीटिंग कर दें. अगर आप ब्लड लीटिंग करने में माहिर हैं तो ब्लड लीटिंग कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पता ब्लड लीटिंग करना तो आप निडल या सीड्स लगाकर छोड़ दीजिए. और अगर आप सीड्स लगाते हैं तो उस पेशेंट को बोलिए कि उन सीड्स को दबाता रहे. कीप ऑन प्रेसिंग द सीड्स. On the other side, someone is suffering with the chronic liver disease, fatty liver, then treat this area. Or the lungs problem, treat this area only. Or the digestive disorder, treat this area only. Just area on the inner side, treat this area. Put the needle randomly here. यहाँ पर आपको randomly points लगाने होंगे. अगर हम 5 elements की बात करें, let's talk about the 5 elements. So look at here. What is yin, what is yang, you will able to understand. So as per the 5 element concept, the cycles of the yin yang is like this. So we can divide into parts. On the one side, we can tell it yang. On the other side, we can tell yin. So the meaning of yang is the liver, is the heart, and even the brain, So these are yang. अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो आप yang में ट्रीटमेंट दो. लिवर की प्रॉब्लम है, yang में दो. लेकिन अगर किसी का डाइजेशन कमजोर है, स्प्लीन इज कनेक्ट विद द डाइजेशन, और किसी के लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग इज द गवर्नर ऑफ ची, और द किडनी इज हैविंग सम प्रॉब्लम. So if you want to improve the digestion, if you want to improve the lungs, and if you want to improve the kidney, do the treatment in the yin side. So look at here. So as per the concept of 5 element, this outer part is connected with the liver as well as the heart, and the inner part is connected with the lungs as well as spleen. So look at the other chart. Look at here. Look at this chart. This is the very famous chart. We can see this, the back side of the ear. हम पीछे से कान को देख सकते हैं. This is the back side of ear. So this is the outer part, or the yang. This is the outer part of the yang. In this part we have liver and we have heart. Heart will be in the upper side, because heart means too much fire. Heart is the center of fire, storehouse of fire, heart. So the upper part will be heart, and the lower part will be liver, but all together this will be the yang. अपर पार्ट को हम हार्ट कह सकते हैं और नीचे के पार्ट को हम लिवर कह सकते हैं. दोनों को मिलाकर हम yang ही कहेंगे. So if someone is suffering with the problem of the yang, treat complete part, whether the heart or the liver
हार्ट एंड लिवर आर वेरी डीपली इंटरकनेक्टेड, दोनों बहुत ही गहराई से जुड़े रहते हैं। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये ऊपर हार्ट है, दिस द हार्ट, and this whole outer area is the liver, because liver and heart is equal to yang, right? And if you go inside, then we can see this inner area is the lungs, and next to lungs is the spleen. They are yin. Okay, and kidney, we'll discuss about the kidney. So let's see the 5 element cycle. अगर हम 5 element cycle को देखते हैं, so look at once again here. In the 5 element cycle, the lowermost element is the water, and the next element is the wood, the next element is the fire, the next element is the earth, and the next element is the metal. So the fire means the heart is in the uppermost part, and fire also always want to go up, so fire will be in the uppermost part. अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहती है, तो अग्नि ऊपर का पार्ट ऑक्यूपाई करती है. And if we see the kidney is, or water want to go down, so the kidney is occupying the lowermost part. किडनी हमारे शरीर के लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई करती है. दैट्स व्हाई इफ वी सी द ह्यूमन बॉडी, अगर हम मानव शरीर भी देखते हैं, लुक एट द ह्यूमन बॉडी. So the heart will be in the upper part, and the kidney will be in the lower part. So heart is up and the kidney is down. So if we look at the ear, अगर हम कान को देखें, so the uppermost part will be represented in the heart, this uppermost part will be represented in the heart, and the lowermost part doing the representation of the kidney. Now all the remaining organ are in the center. बाकी जितने भी बचे कुचे वो सब नीचे. तो जो हमारे ईयर का लोब है वो हमारे किडनी को रिप्रेजेंट करता है, अपर पार्ट हमारे हार्ट की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, बाकी बचे लंग्स, स्प्लीन और लिवर, ये हमारे कान के मध्य भाग में पाए जाते हैं. सो दीज आर लोकेटेड इन द मिडिल. So if we look at in this image, so upper part is heart. So this upper part is heart. The lower part is kidney. Lower part is kidney. Now this outermost part will be the liver, because liver is also the yang. Then the innermost part will be the lungs. And spleen will be here. This is the spleen, or the digestive part. This is the spleen. In this way, we have all the organs availability in the back side of the ear. हमारे कान के पीछे सारे organs की availability है. So now someone is suffering with the cardiac problem. You can treat this. You can treat this. Someone is suffering with the fatty liver or the liver disorder. You can treat this. Someone is having the problem the kidney. You can treat this from the backside. The disorder of the lungs, you can treat this. The disorder of the digestive system, you can treat this.
In this way, you can treat each and every organ in the back side of the ear. आप कान के पीछे सारे अंगों का इलाज कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीड्स लगाना है या फिर आपको निडल लगाना है. Just do this, whether to put the seeds or the needle. Now, the very important thing. Suppose someone is suffering with a high blood pressure. अगर किसी को एकदम से हाई बीपी हो गया तो हमारे कान के पीछे एक सिंगल पॉइंट होता है जिसकी मदद से हम हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं. We can reduce the high blood pressure immediately. अभी मैं आपको फील करवाऊंगा. हमारे कान के पीछे सबसे पहले तो आप ये ऊपर हार्ट का पॉइंट देखिए. ये हार्ट का पॉइंट, इसके नीचे खड्डा होता है. There is a ditch. So this is the ditch here. Just below the heart point, this is the ditch, this is the groove, this is the खड्डा. यहाँ पर खड्डा है. इसी को हाई बीपी डिप्रेशन कहते हैं. This is called high blood pressure depression. The depression of the high blood pressure. Now try to feel it. इसको फील करके देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है. It's a very important. The groove of the high blood pressure. So look at my ear. This upper part is the heart. We are talking about the back side. हम posterior कान की बात कर रहे हैं, ये पूरे कान की बात कर रहे हैं. So this upper part is the heart. And the lower part is the kidney. And this whole outer area, that is the liver on the back side. Now this inner area, that is which is attached, that is the lungs, and this groove is spleen. This groove is the spleen. अभी हम समझेंगे आगे चलकर कि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, तो हम ट्रीटमेंट कान के पीछे देते हैं. कान के आगे उतना फायदा नहीं मिलता. The front part of the ear is very good, no doubt. But when you want to treat the stroke, when you want to treat the paralysis, when you want to treat the motor disorder, then you have to go to the back side of the ear. Then you will receive the very good results. तब आपको रिजल्ट मिलेंगे. जैसे कान के आगे हमारा संपूर्ण शरीर पाया जाता है, ऐसे कान के पीछे भी संपूर्ण शरीर होता है. थोड़ा इमेज इधर उधर होती है. लिटिल डिफरेंस इन द इमेजेस. तो जब कान के पीछे हाँ की बॉडी को हम ट्रीट करते हैं और उसको इमेजिन करके जब हम ट्रीट करते हैं तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को गजब का रिजल्ट मिलता है. सो वी वांट टू ट्रीट द पैरालिटिक पेशेंट, treat on the back side, that is called the motor part of the ear. This is the sensory part of the ear, very good for pain. But this is the motor part of the ear, very good for the motor functions. ये motor function के लिए बहुत अच्छा है. Like heart is not pumping well, treat here. Liver is not doing good detoxification, treat here. Kidney is not doing good filtration, treat here. Lung is not doing good breathing, treat here. Spleen is not doing the digestion, treat here. So the function is called motor actions. Motor actions. What is video? क्या वीडियो दिखाऊं मैं आपको? What is the problem? What video? What is the meaning of video, please? Everything is okay?
ओके, तो हमारे कान के पीछे की इमेज के माध्यम से हम जब इलाज करते हैं तो तीव्र गति से मोटर एक्शंस में फायदा मिलता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर एक्शंस? सपोज this mobile is very wonderful, wow, so good mobile, but not working. Then what is the meaning of this mobile? So if the thing is working nicely, we are telling the motor functions are good. You are having very beautiful air condition, but it's not working. So the work or the action is called motor functions. तो मोटर फंक्शन का मतलब है कि काम काम करना. आप देखने में बड़े सुंदर हैं. हमने कहा कि मिस्टर नरेंद्र जी, अरे वाह, आप तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन चला नहीं जाता. घुटने में दर्द होता है, पेट बाहर निकल गया है, कमर में दर्द होता है. मतलब देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन एक्शन में कुछ नहीं. सो जब हम किसी चीज का फोटो खींचते हैं, वो है, वो तो दे व्हाट वी कैन सी, इसे हम कहते हैं यिन. लेकिन वो कैसा काम करती है, वो मशीन कैसा एक्शन करती है, उसे हम कहते हैं यांग और मोटर एक्शन. सो व्हेन यू वांट टू रीड द मोटर एक्शन, वी हैव टू ट्रीट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द ईयर. कान के पीछे से हमें ट्रीट करना होता है उससे. राइट, ओके. सो नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू डू वन थिंग. सर्च द ग्रूव. ग्रूव को ढूंढिए. कान के पहले ऊपर वाला पार्ट पकड़िए, ये वाला, और फिर उसके नीचे ग्रुप को सर्च करिए. सर्च दिस एरिया, देन सर्च दिस ग्रुप. ये ग्रुप को ढूंढिए. लुक एट दिस ग्रुप. कितने लोगों को ग्रुप मिला? अब चलिए इसी ग्रुप के इस ग्रुप में एक उंगली रखिए, और इसी ग्रुप के फ्रंट साइड में भी एक उंगली रखिए. सो वन फिंगर कीप देयर एंड वन फिंगर जस्ट ऑन द अपोजिट साइड. Just keep one finger on the opposite side. Now, if you put the point on the back side, that will become the point of the Chinese auricular. And if you put the point in the front side, that will become the point of master tongue for heart, for high blood pressure. जब कान के पीछे आप टच करते हो तो वो चाइनीज का पॉइंट बन जाता है. जब कान के आगे टच करते हो तो मास्टर टंग का पॉइंट बन जाता है. मास्टर टंग के पॉइंट्स हमेशा हम अपोजिट साइड में लगाते हैं. अब आप बोलेंगे कि हार्ट पॉइंट की क्या जरूरत है भाई? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हार्ट पॉइंट? बताइए, हार्ट का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द हार्ट? द समवन इज टेलिंग यू, डॉक्टर, आई एम हैविंग poor circulation, there is a numbness in my leg. Improve the circulation with the heart point. Just put the heart point and the kidney point, just 2 points, and with the help of 2 points, you will able to treat lower back pain. So suppose this is the seeds. ये दाना है. अगर इस दाने को मैंने आगे लगा लिया, if I'm putting the seeds in the front side, this become the point of the master tongue for heart. And if I'm going just on the back side, because here we will see the groove, then this is becoming the point of Chinese auricular, the very good point for high blood pressure, that is called hypertensive groove. उसका नाम है कि hypertension का ग्रुप. इस पॉइंट को कहते हैं the group of hypertension. 1 minute.
आप लगा के देखिए। अगर कोई कहे आपको कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, आप पूछना कि छाती में कहाँ दर्द हो रहा है, और राइट में कि लेफ्ट में। पूछना कि बताओ तो कि आपके राइट हार्ट में दर्द है कि लेफ्ट हार्ट में दर्द है। हमारे पास कितने हार्ट है, हाउ मेनी हार्ट वी हैव, उसको आस्क in which heart you are having pain, or in the right heart or in the left heart, right? So the person will tell you, yes, definitely left heart. Doctor, I have only one heart. I'm single heart person. Okay. So the person is having pain this side. Just put single point here and see within 2 minutes. 2 minutes, heart pain will go away. Just I have used this seed. I was traveling throughout the India, and I worked in many camps. So during the camps, in the yoga camps, so many person are doing the Kapalabhati, and because of the more pressure, they were having high blood pressure and heaviness in the heart. As soon as we put this point, heaviness and the BP is becoming normal. Single point for the heart. I applied the single for many persons. So what we can do, if you want to enhance the effect of this point, put one seat in the front side, even put one seat on the back side, on the opposite side, no problem. एक दाना आगे लगा दो, एक दाना पीछे लगा दो, या निडल को आर पार कर दो। आर पार, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कार्टिलेज में से निडल चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बात सच है कि जरूरत नहीं होती है कार्टिलेज में निडल डालने की, पॉइंट तो कार्टिलेज के ऊपर ही होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि गांव में लोग इस पॉइंट को छेद करके इसमें थोड़ी एक कुछ पहना देते हैं रिंग जैसी, तो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। द पीपल आर गेटिंग गुड बेनिफिट इन द हार्ट just by just making the hole and putting the point here. Getting my point? So this is a very good point. In the master tongue, the name of this point is 99.03. मास्टर टुंग ने इस पॉइंट का नाम दिया है 99.03, और चाइनीज ऑरिकुलर में इस पॉइंट को कहते हैं on the back side hypertensive group. Excellent point. Do not forget this point, because this point is bringing effect in 5 seconds. Just a 5 seconds. And put this point, praise the point this year and this year, where the person having more tenderness you can put there. उस कान में आप इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। I think it's clear now. I told that when we are doing the auricular acupuncture, no need to penetrate this cartilage, because this cartilage is little painful, and when we are treating, no need to penetrate this cartilage. Just put the point in the surface, that is enough. But if you are I have seen in the blazes, the many blazers, desi doctors, the traditional doctor, even they are doing the penetration in the cartilage, even after that person are getting benefit. So what I want to tell you, whether you penetrate the cartilage or you do not penetrate the cartilage, in both the condition you will get the results. But as a clinical doctor, better not to give more pain to the patients, so don't penetrate the cartilage, just put on the surface. कि हम जब क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तो हम ज्यादा दर्द नहीं दे सकते पेशेंट को। अगर हमने बहुत दर्द दिया तो फिर पेशेंट घबरा जाता है, तो हमने तो इस सिंगल पॉइंट लगा के छोड़ दिया, और आप 3 दिन के बाद उसे फोन करके पूछ लेना, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब उस दिन से दर्द नहीं हुआ छाती में, आई हैव नेवर फेल्ट पेन ऑन द सेम पॉइंट नाउ। देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ 1+1 फॉर द नी पेन। अगर इसके साथ हमने एक पॉइंट और लगा दिया तो घुटने का दर्द भी चला जाता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। So this is only good for high blood pressure, right? Let's go ahead and see the next point. So someone is suffering with a fatty liver or the hepatitis.
You can treat this area. You can treat this area. This is the very good area for the disorder of the liver. Liver is the yang, so this is the very good area if you want to treat the liver. You can see this is the liver return. But if you just want to treat single point, अगर आप इतने सारे पॉइंट नहीं ट्रीट करना चाहते हो, if you just want to eat this, so just find out the midpoint of the ear and treat this point. Find out the midpoint. So that is the liver point. Now I would like to tell you a few more things about this point. अब मैं इस पॉइंट के बारे में और कुछ चीज बताना चाहूंगा कि लिवर की ऊर्जा कहां से प्रवेश करती है. लिवर की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करती है. द एनर्जी ऑफ द लिवर. So suppose this is the human body. The liver energy of the liver is entering from the DU20. Then it is going to the eyes. That's why if someone is suffering with the eye problem, we treat liver meridian. Then it is going to the lips. So if you want to treat the lips, you can treat the liver meridian. Then it is passing from the throat. So if you want to treat the throat pain, you can treat the liver meridian. Then it's passing from the heart. If you want to treat the heart, you can treat the liver meridian. Then it's passing from the liver. That's why we are telling it liver meridian. And finally, this energy is reaching to the genitals. Genital. So if you want to treat the genitals, you can treat liver meridian. तो लिवर की ऊर्जा हमारे DU20 से प्रवेश करती है, आंखों से होती हुई लिप्स को सप्लाई करती हुई, गले और हार्ट को सप्लाई करती हुई, लिवर से होती हुई जेनाइटल पर पहुंचती है. तो मास्टर टंग कहते हैं, एज पर द मास्टर टंग, if you treat this point, the liver point, if you are treating this single point, just the midpoint, search the midpoint. If you treat this single point, this is a very good point for tonsillitis. This is a very good point for the throat pain. This is a very good point for the migraine or the central line, and this is a very good point for the genitals. Wherever your liver meridian is going, this point will work because this is the point of the liver. जब हम liver बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जब हम liver बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या केवल liver organ आता है? अगर केवल liver organ आता है तो आपके दिमाग में incomplete picture आता है, क्योंकि हम एक्यूपंक्चर में हम केवल ऑर्गन की बात नहीं करते, हम पूरे मेरिडियन की बात करते हैं. We are talking about the full meridian, and as per the acupuncture concept, liver means not the liver organ only. The meaning of liver, this full meridian. तभी तो आपकी आंखों में तकलीफ होती है तो आप लिवर को ही तो ठीक करते हो. क्यों करते हो? क्योंकि आप लिवर मेरिडियन पर काम करते हो. अगर किसी को जेनाइटल पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए तब भी हम लिवर को ठीक करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लिवर मेरिडियन पर काम करते हैं. So this point, the single point, is very good. I will tell you, one person was suffering with the fatty liver grade 2, having severe pain in the liver. एक पेशेंट को लिवर का तकलीफ था, fatty liver grade 2. He was crying with the pain. Did the sonography, found fatty liver grade 2. हमने इस पॉइंट से 3 से 5 बूंद ब्लड निकाल दिया, उसका लिवर का पेन तुरंत ठीक हो गया. तो इसका मतलब है कि लिवर ऑर्गन पर भी काम करता है. So just we expel the 3 to 5 drops blood from this point and the patient become normal immediately. So this point working on the liver. So what I want to tell you, if the someone is suffering with the liver problem, you should treat this point. आपको इस पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए. अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो रोज इस पर एक सीड लगा दो. You can put the seeds every day here, or you can put one additional seed up and down. So this is the very good liver area.
right? Now, so we have treated the heart from here. Now we have already treated the liver. So this is the liver. We have treated the liver. We already have discussed about this hypertensive group. This is the hypertensive group or the high blood pressure area. This is the group. This one, high BP group. Now, one more thing I would like to tell about the heart. चलिए एक बात बताइए कि आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है साइटिका पेन को लेके, तो एक्यूपंक्चर में क्या हम उसे साइटिका पेन कहते हैं? एक्यूपंक्चर में क्या हम नी पेन का इलाज करते हैं? क्या एडी का दर्द का इलाज करते हैं? क्या साइटिका का इलाज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. We don't treat sciatica pain. We don't treat knee pain. We don't treat heel pain. We are not treating the shoulder pain. What we are doing, we are treating the root cause of the sciatica pain. We are treating the root cause of the knee pain. For example, as per the acupuncture, there are two regions of the sciatica pain. Number one, the sciatica pain is because of the hypofunctioning of the heart or the hypofunctioning of the lungs. साइटिका पेन के दो ही कारण हैं, या तो उस व्यक्ति के लंग कमजोर हो गए हैं या उस व्यक्ति का हार्ट कमजोर हो गया है. तो अब आप बोलोगे यार ये कौन सा लॉजिक हो गया? ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है. आई विल प्रूव इट. एनीवन कैन प्रूव इट? आई विल प्रूव इट. In the TCM it's written the person is suffering with the sciatica pain due to the hypofunctioning of the heart. अब आपको sciatica pain को ट्रीट नहीं करना है, आपको हार्ट को ठीक करना है. In the acupuncture it's written the sciatica pain is because of the hypofunctioning of the lungs so you have to treat the lungs. It's a very simple logic कि अगर किसी व्यक्ति के लंग और हार्ट मजबूत हैं उसको sciatica pain हो ही नहीं सकता. Impossible. So they are the root cause. So they are the root and sciatica is the fruit. हम फ्रूट की बात करते हैं, हमको धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा. Slowly and slowly, suddenly what is happening when we are discussing, then we are discussing, oh, can you tell me the protocol of the sciatica? No, don't ask in this way. हम ऐसा पूछते ना कि साइटिका का प्रोटोकॉल बताओ, ऐसा नहीं. हमें पूछना चाहिए कि यार इस व्यक्ति के लंग कमजोर हो गए हैं तो साइटिका का कैसे प्रोटोकॉल बनेगा? अब सही बात हो गई. It's giving clear message. The person is suffering with a sciatica pain because of the hypofunctioning of the liver. Let's see here. So let's see here. Look at here. So look at this. Look at this round. So look at this round. What is the meaning of this round? We are making organ clock cycle. So as per the organ clock cycle, 3 to 5 is the time of lungs. And in the evening, 3 to 5 is the time of urinary bladder.
So if lungs are poor, the pain will be reflecting in the urinary bladder. अगर किसी के लंग कमजोर होंगे तो उसे यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन में दर्द होगा. So this is called the pain because of the hypofunctioning of lungs. Now let's look at the heart. The timing of heart is 11 a.m. to 1 p.m. कि हार्ट का जो टाइमिंग होता है वो 11 से 1 होता है, और रात को 11 से 1 जो टाइम होता है वो होता है गॉल ब्लैडर का. So this is the gall bladder. So the person is having poor functioning of the heart, the pain will be reflecting in the gallbladder meridian. So only two causes responsible for the sciatica pain. केवल दो ही कारण हैं sciatica pain के. बाकी आप बोलेंगे यार इसकी तो कमर में डिस्क दब गई है, वो सब फ्रूट है, रूट वही है. So if you look at the bladder, so person is suffering with a lung weakness, this urinary bladder meridian will be becoming weaker and the person is suffering with the sciatica pain. So this is called the sciatica pain due to hypofunctioning of the lungs. तो इसे हम कहेंगे कि sciatica pain है लंग की हाइपोफंक्शनिंग के कारण. और किसी के हार्ट की फंक्शनिंग कमजोर हो गई है, द पर्सन इज सफरिंग विद अ पुअर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, then the sciatica pain will be in the root of gallbladder meridian on the side. We know the gallbladder meridian is passing from the side, that we know. तो जब हम इस कान की इमेज को देखते हैं, अब किसी को sciatica pain होता है, the person is suffering with the sciatica pain, so whether we have to treat the heart. So this is the very excellent point for the sciatica pain. If you do the bloodletting from here, this is the excellent point of the sciatica pain. अगर यहां से पेन नहीं गया, ज्यादातर पेन यहीं से चला जाता है. Then treat the root of the ear, this part, this is the lungs, and this is the heart. So we always tell the treatment is not important. The more important is the diagnosis. More important is the diagnosis. चलिए मैं आपको एक बार इन पॉइंट्स की लोकेशन दिखा देता हूं. बहुत कुछ see, the pain in the spleen meridian, that is also due to lungs. Lung and spleen are interconnected. Let's see now. So if we look at the ear from the back side, अगर हम कान को पीछे से देख सकते हैं तो ये कान का रूट है. This is the root. इसे हम कहते हैं lungs. So this is the lungs, the root of the ear, that is called lungs. So look at once again. ये जो कान का रूट है जो पीछे जुड़ा हुआ है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं lungs. And the center point is the lungs point. The center point is the point of lung. So we can treat this area for the lungs. Now, the upper area is the heart. ये upper area heart है. और यहां पर जब हम बारीक से देखते हैं तो यहां पर हमें हल्की हल्की ब्लू कलर की बेन्स दिखाई देती हैं. We can see the blue veins here. If we look at this part, upper part, we can see the blue color veins here. So if we bleed these veins, we can treat the sciatica pain. अगर हम veins को bleed कर दें तो हम sciatica pain को ठीक कर सकते हैं. अगर हमें bleed नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, तो हम इसे acupressure कर सकते हैं. If we don't want to bleed, then we can do the acupressure. तो हम इनको
we can do the acupressure if we don't want to bleed, and we put the seeds here. So this upper part is the heart point, and it's also very good for the high heart conditions. Now we can see this groove, ये ditch, यहाँ पर हमें जो खड्डा दिख रहा है, you can see this the groove or ditch. So this groove or ditch, that is a hypertensive groove, इसे कहते हैं कि हाई बीपी का खड्डा, इसे हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का खड्डा। तो जब हम इस खड्डे को ट्रीट करते हैं, इसमें मसाज देते हैं, इसमें सीड्स लगाते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये पूरा ऊपर का पार्ट है, हमने बता दिया कि दिस इज कनेक्ट विद द हार्ट। सो आई वुड लाइक टू पुट द सीड्स हियर, लुक एट हियर। तो एक सीड में लगाता हूं ग्रुप में। सो वन सीड आई एम पुटिंग इन द ग्रुप, सो दिस द ग्रुप, this is the high blood pressure group. I will put one more seed in the group that is also the high blood pressure group. ये भी हमारा high blood pressure group है। तो इस ग्रुप के माध्यम से हम हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। We can reduce the high blood pressure with the help of this group. 1 minute. Yeah. Now, if we look at this part, this is the heart. मैंने बताया this is the heart, whole area is the heart. और यहाँ को ब्लड लीड करके हम साइटिका पेन को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि साइटिका पेन हार्ट की हाइपोफंक्शनिंग से होता है या फिर लंग्स की हाइपोफंक्शनिंग से होता है। और जब हम ब्लीड करेंगे तो यहाँ पर हम ब्लू कलर की बेन्स को ढूंढेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की बेन्स है, इसको ब्लड लीड कर देंगे। अगर बेन्स ना मिले तो हम नॉर्मल एरिया को ब्लड लीड कर सकते हैं। सो वी कैन डू द ब्लड लीडिंग फ्रॉम दिस एरिया फॉर द साइटिका पेन। नाउ लुक एट द लोअर मोस्ट एरिया। अब नीचे वाला पूरा एरिया देखिए, ये पूरा का पूरा जो लोअर एरिया है, इसे पूरे एरिया को किडनी कहते हैं। दिस द किडनी, द होल लोब्स, दिस होल एरिया द किडनी एरिया। We can put the black color here and we can improve the kidney. हम इस पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं और किडनी को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हम इस पर 2-3 सीड्स लगा सकते हैं। We can put 1 seed and even few more seeds here. So this area belong to the kidney. इसके हम फर्दर डिवीजन देखेंगे आगे चलकर। This is just the overview. Then I told you the inner area, just if we divide the ear just from the middle, this is the lung. हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी को लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ब्रीथिंग डिसऑर्डर है, we can massage this area or we can put the seeds here or we can put the needle here. So this is the lung area. Now this outermost surface is the liver. ये बाहर की जो surface है ये liver है. This is the liver. और अगर आपको एक पॉइंट जानना हो लिवर का, तो पूरे कान को एकदम मिडिल से देख लो। दिस इज द लिवर पॉइंट which is very beneficial for the fatty liver, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, and the many other disorder which is connected with the liver. जब हमारे ब्लड में SGPT का काउंट बढ़ जाता है और लिवर की बीमारी हो जाती है, तो हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं या इससे ब्लड निकालते हैं। ये लिवर को भी ठीक करता है, लिवर मेरिडियन को भी ठीक करता है, और लिवर मेरिडियन के रास्ते में आने वाले सभी बीमारियों को भी ठीक करता है। So this is the liver point. So we'll put 1 point on the liver. We can put 1 to 3 point here. So 1 point I am putting in the liver. So this is the liver. Now, अब हम देखेंगे कि हमारा लंग्स हो गया, बाहर लिवर हो गया, यहां बीच में एक खड्डा है। We can see the groove here. This groove is called, इसे कहते हैं पाचन तंत्र का खड्डा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस ग्रुप को हम बोलते हैं स्प्लीन। सो दिस सेंट्रल पार्ट इज कनेक्टेड विद द स्प्लीन। अगर हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा स्प्लीन मजबूत होता है, और स्प्लीन मजबूत होता है तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। सो आई विल पुट 1 seeds on the spleen. So the outer is liver, then the spleen, then the lungs, upper is heart and lower is kidney. इस तरह से हमने कान के पीछे 5 ऑर्गन्स की बात करी है। इन्हीं 5 ऑर्गन को हम 5 मुख्य यन बिंदु कहते हैं, और इनके माध्यम से हम with the help of this we can treat multiple problems and these points are very effective. इनके रिजल्ट्स हमें नीचे वाला बंद करो,
और इनकी मदद से हमारे रिजल्ट्स बहुत ही क्विकली मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, कान के पीछे पाए जाने वाले बिंदु बहुत तीव्र गति से काम करते हैं।